there's this quote that I like to repeat, which says that you build a dream and a dream builds you. So if I have to look back at my life until now, this is what it has been like. We were in Mumbai for our GST attachment, and I was at Haji Ali. We were looking at a sunset, and I just thought that where was I 1 year ago, and I had nothing in my hand. And today I'm here at Bombay, and I loved Bombay, and just watching the sunset. And I realized that the only thing I had then was hope. I saw a dream when I was in class 9. Around that same time, Dr. Shah Faisal sir had topped the Civil Services Examination. And उनका प्रतियोगिता दर्पण में वो इंटरव्यू का वो शीट मैंने निकाल के आज भी मेरे पास रखी हुई है, उसकी फोटोकॉपी करके मैंने अपने टेबल पे चिपका के रखी हुई थी. बट जब मैं बहुत स्पीड राइटिंग करती थी तो थोड़ा सा अनक्लियर हो जाता था. तो फिर मैंने राइटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिया कि मैंने सोचा कि नहीं अब एक सारी मतलब ह्यूमनाइज करना चाहती हूँ. मैंने टॉक टू एस्पिरेंट्स की I also used to cry every day. I also used to feel horrible every day. All the kind of emotions that people feel around the preparation of this examination, it's all very, very natural and normal. And coming on this side, I look sorted and I look like I've accomplished something. Yeah. But I was broken, I was finished. There were times when I felt that my story is over. There's nothing that I had to look forward to. And these were not just few days, but these were weeks, months and years. फिर मेरा यही था कि फिर अब बस कॉलेज से निकलेंगे. I graduated in 2017. एक साल determined होकर पढ़ना है, and then I'll crack the examination and get the topmost rank. I could not foresee what could stop me. But then comes prelims. So then in 2018, 2019, 2020, all 3 years, I could not qualify prelims. I think it's a journey. I think आप बता भी नहीं पाओगे a lot what actually you went through. Like you said, did you say it's a blot? अब मैं भूल चुकी हूँ उसको क्या हुआ था. But the point is कि आपको सिर्फ material support नहीं चाहिए होता है, आपको emotional support चाहिए होता है. And this examination is such कि यहाँ पे you're dealing with multiple things. One is कि आपका अपना self image destroy हो रहा है basically, and then this comes and hits you in the face. And the problem is not कि prelims का एक दिन and उसका result जब आया then it hits. The problem is you live with it every single day. One thing that is common across all of us who have made the cut is कि वो कोर चीजें सही की गई. पता है इस पूरे एग्जामिनेशन और इस कॉम्पिटिशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि most people are not doing the basic things and not doing them right and not doing them enough. एक बार कर लिया, बोर हो गए, कुछ और उठा लिया, ठीक है. Hey guys, very, very close to prelims we are, and I have Preeti in front of me. Today we're going to chat a lot about her journey. जिसमें she faced 3 prelims failure and then cleared the last prelims by considerably good margins. And ये वाली chat important इसलिए क्योंकि आप लोगों में से जो लोग दे रहे होंगे prelims, multiple attempt दे रहे होंगे, would have gone through something similar, even a subset of her journey, would kind of get a first-hand idea of the grit and nuances of the struggles of an aspirant. And it's beautiful because prelims are just round the corner. So whoever is going through and needs the last-minute momentum push, please watch this video completely. I'll give you a schema of अपन क्या-क्या बातें करेंगे. First, we'll let the floor open for Preeti and she'll take through the journey. क्योंकि UPSC has always been close to your heart. You've always grown thinking that you want to crack this. And with that head, जो सालों से चला आ रहा है, जब कोई 3 बार setbacks लेता है, तो it's a different ball game कि आप वापस निकल के कैसे आते हो. Then she does that. She's an IRS officer. And she, obviously you guys would know, she has written a lot of blogs, given a lot of interviews. So a lot of stuff which she has figured out in the journey, she's already given out in the public. In this raw and real conversation, we're going to go deep into some of the things which maybe she missed out or she would love to get back. फलसफा पूरी जर्नी का शायद यही है जो मैं समझा था कॉल से प्रीति की, करने से होता है. Knowledge is all there, content सारा कुछ है वहाँ पे, but the way you make it your own, the way तुम introspection करके खुद जाते हो अंदर, and the more you are able to build this momentum closer to the exam, that will help you crack it. Right. So we'll focus on how, the doing attitude versus just the knowing attitude made difference for her. And somehow we'll try to tell कि हम भी कैसे same philosophy में कहाँ operate कर रहे हैं and see what we can do together. Cool, Preeti. So I'll open the floor to you. Thanks for, finally coming in. Took a while for us to, find a time. But good, we are on the right timeline. This video probably will go tomorrow or day after. And bilkul bang on timeline hai ki, kids will be able to take the max out of it.
Please thoda batao, what was the journey like, and then get to the setback things and then the victory. Thank you, Rohit, for the introduction. And so it's been a very long journey for me around this examination. And presently, agar main bata dun, to I am in IRS CNIT batch of 2022, and I'm undergoing my training. So this whole journey for me started when I was in school. And I have this whole narrative of story built up around this. कि जैसे especially for people from Bihar and UP, there's just this knowledge, this awareness कि civil services क्या होता है. घर में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता होता है. तो मुझे भी वैसे पता था, but it was never really like a dream or a passion until I was in class 9th. And कुछ ऐसे मुझे realize हुआ कि I want to do something good in life, something which can create an impact, and I knew of civil services. तो बस वो बचपने के उसमें मैंने decide कर लिया कि I wanted to do this. And there's this quote that I like to repeat, which says that you build a dream and a dream builds you. So if I have to look back at my life until now, this is what it has been like. I saw a dream when I was in class 9. Around that same time, Dr. Shah Faisal sir had topped the civil services examination. एंड उनका प्रतियोगिता दर्पण में वो इंटरव्यू का वो शीट मैंने निकाल के, आज भी मेरे पास वो रखी हुई है, उसकी फोटोकॉपी करके मैंने अपने टेबल पे चिपका के रखी हुई थी. एंड इवन बिफोर हिम व्हेन आई वाज इन क्लास 5th and 6th, जस्ट लाइक आई सेड, वो थोड़ी अवेयरनेस थी. तो मोना प्रूदी मैम थी, शी हैड टॉप द सिविल सर्विसेज देन. सो आई हैड लाइक दीज फ्यू पीपल इन माई माइंड एंड आई हैड दिस होल ड्राइव. एंड उसके बाद फिर 9th तक तो आई वॉज एन अबव एवरेज स्टूडेंट, बट 10th से आई बिकेम वेरी सीरियस. 11th 12th में आई टॉप्ड. आई चोज ह्यूमैनिटीज बिकॉज आई लाइक्ड ह्यूमैनिटीज. एंड देन आफ्टर दैट, आउट ऑफ ऑल माई ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, मुझे पॉलिटिकल साइंस पसंद था, तो मैंने कॉलेज में वही परस्यू किया. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम मिरांडा हाउस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. और कॉलेज में ऐसा था कि मेरा मतलब पहला दिन जब कॉलेज का था, तो मैम ने पूछा, मेरी एक प्रोफेसर रही है everybody ki how many of you want to do civil services, and around 95% of my class raised their hands. And that was like the first day of college. तो मुझे लगा, oh my god, ये तो सिर्फ एक क्लास है, एक यूनिवर्सिटी और एक कॉलेज का. what kind of competition am I looking at? And I'm looking at the top rank. So वो एक होती है ना अंदर जो आग जलती है, तो वो आग जल, वो मैगजीन्स, करंट अफेयर्स की मैं तब से ही लेके घुमा करती थी. न्यूज़पेपर हमेशा मेरे बैग में रहा करता था. कुछ क्लासेस भी मैंने ज्वाइन किए, फिर आई रियलाइज दे वर ऑफ नो यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. एंड देन फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस एग्जाम को समझने में बहुत टाइम स्पेंड किया. तो क्योंकि टाइम था मेरे पास कॉलेज में, तो a lot of the things that I used to do in college was oriented towards this. जैसे कि मुझे पता था कि ऐसे का एक पेपर होता है एंड लिखने पढ़ने में मजा आता है, तो मैंने ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशंस में I started participating, and I kept participating in every such opportunity. Eventually I started winning, and I got a flair at it, which finally जब मुझे मेंस लिखने का मौका मिला, it did reflect in it. I got 134, which was one of the good marks in essay. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मैंने कॉलेज टाइम पूरी की, एंड फिर मेरा यही था कि फिर अब बस कॉलेज से निकलेंगे. आई ग्रेजुएटेड इन 2017. एक साल डिटरमिन्ड होकर पढ़ना है, एंड देन आई क्रैक द एग्जामिनेशन एंड गेट द टॉप मोस्ट रैंक. I could not foresee what could stop me because I had both the energy, determination of being a good student. तो ऐसे था. But then comes prelims. So then in 2018, 2019, 2020, all 3 years, I could not qualify prelims. In 2020, I failed paper 1 by less than 1 mark, 0.5 or 0.75 se, and CSAT by 5, 6, 7 marks. So that was one of the lowest points of this whole journey, and the whole year and so after that also it was the lowest, because third attempt obviously कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेहनत मैंने कम कर दी किसी भी attempt में, किसी भी successive attempt में. मेहनत हमेशा बढ़ी थी, तो you expect कि यार इस बार तो हो जाएगा. बट तब भी जब नहीं हुआ, तो फिर मैंने 1-2-3 महीने I sort of took a break in the sense कि I started working with some institutes, model answers बनाना, papers check करना, ये सारी छोटी मोटी चीजें मैंने की, just so that I stay connected to the examination process but also take a break from just studying. Then fourth attempt के लिए मैंने prepare किया. Fourth attempt में finally once prelims happened, तो everything उसके बाद worked out, and मुझे ये confidence था कि जिस दिन prelims हो जाएगा उस दिन I will find my name in the final list because of how hard I'd worked for mains.
एंड थर्ड अटेम्प्ट में व्हेन आई वर्कड विद डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे थोड़े मोड़े जो मैंने काम किए, तो आई रियलाइज मोर कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन and how one can fulfill the demand. And to be honest, it's something very basic and specific, and that is why I always take out some time and effort to write as much as I can about it. Now again, this is a platform, Civilsdaily, classes, mentorship, सब कुछ ना कुछ चलता होगा. I make use of these platforms to only again re-emphasize कि nobody else can help out in this examination but oneself. कि आप इस एग्जाम को कितने अच्छे से समझ पाएंगे, that will determine whether you'll succeed or not. So roughly this has been the journey. Fourth attempt finally I qualified. In the last attempt, you convincingly cleared the prelims, right? Above 20 plus from the cutoff, right? So that was like a convincing jump. But let me take you back, okay? So you had this thing all your life, the dream, and you were working sincerely towards it. And I'm sure people would know, your family or friends would know कि ये करना है करके, right? What happens when you and you didn't have any doubt? So your sincerity, you also believe that वो सब चल रहा है, but UPSC is unpredictable. What happened when the first or second or third setback happens? Like how do finally things break and then fall into place? मतलब, can you take back to that journey? I'm sure everyone knew, so it becomes even more difficult, right? वो social contract वाला psychology का फंडा आ जाता है, right? Underdogs के लिए फिर भी easy होता है. How does it start panning out? It was harrowing to say the least. मतलब when मुझे तब भी लगता था, आज भी मुझे लगता है कि वो इतना कुछ देख ले आना उस फेज में कि I sometimes just like to forget it as a black hole, because मुझे याद है हर साल वो मोस्टली फर्स्ट एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मई जून में ही होता था एग्जाम, और उस दिल्ली की गर्मी में जब प्रीलिम्स लिखकर वापस मैं आ रही होती थी पापा की गाड़ी में बैठकर पीछे, I used to be crying my eyes out, my heart out, because वो hope होता था कि नहीं हो जाएगा, and by the time paper used to get over, I was convinced कि नहीं हो रहा है. अच्छा, कुछ ना really? कुछ थोड़ा बहुत You knew कि कुछ कहीं अटक जाएगा ये पेपर, और it was never a surprise for you? नहीं, मतलब जब मैं पेपर लिख के आ जाती थी तो थोड़ा बहुत ना हल्का फुल्का वो गलती भी थी कि ऐसे चेक नहीं करना होता था, बट आई हैव अ सेंस कि थोड़े मार्क्स से रह जाएगा, थोड़े मार्क्स से ऊपर नीचे हो जाएगा. एंड व्हाट हैपेंड इज कि पेपर फर्स्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू राइट द पेपर, दैट वाज द ईयर व्हेन सीसैट पैटर्न हैडंट चेंज. तो विदाउट डूइंग मच फॉर सीसैट आई वाज गेटिंग अ कंफर्टेबल स्कोर इन 80s 90s ऐसे कुछ. तो फिर मुझे वो भी फेथ था कि यार सीसैट में तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, बट देन थिंग्स चेंज फ्रॉम 2019. तो और 29 सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं गई देने, तो उसके बाद भी मुझे पता चल गया था कि शायद थोड़े से रह जाएगा. थर्ड अटेम्प्ट में आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 में जैसा कि फाइनल स्कोर में भी 1 मार्क से कम से रह गया. पर शाम को जब मैंने सारे पेपर सीसैट के चेक किए, आई रियलाइज सीसैट नहीं हो रहा है. तो जो आपका सवाल है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हाउ डज वन डील विद दोस फेलियर्स एंड व्हेन एवरीबडी न्यू, फैमिली जो इमीडिएट होती है, मेरी फैमिली हैज बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव थ्रू आउट, और मतलब मम्मी पापा भाई सब कुछ, एंड ऑलवेज बीन देयर. कभी किसी की तरफ से ये नहीं था कि कुछ और करना है या कुछ और सोच लो, या बहुत सारे बीइंग अ गर्ल इन मेनी फैमिलीज, द प्रेशर्स फॉर मैरिज एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, दोस थिंग्स नेवर एग्जिस्टेड. सो दे वर एज क्लियर एज मी कि नहीं यही करना है, और जितनी और मेहनत लग जाए, कुछ और क्लासेस ज्वाइन करने हैं, कुछ भी करना है, वी आर देयर. दैट थिंग वाज देयर. बट द पॉइंट इज कि आपको सिर्फ मटेरियल सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है. एंड दिस एग्जामिनेशन इज सच कि यहाँ पे यू आर डीलिंग विथ मल्टीपल थिंग्स. वन इज कि आपका अपना सेल्फ इमेज डिस्ट्रक्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है बेसिकली, कि आई हैव बीन समबडी हु इज एक्सीलेंट थ्रू आउट स्कूल, थ्रू आउट कॉलेज. इतना बड़ा फेलियर तो कभी सोचा भी नहीं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हैपन टू मी. एंड देन दिस कम्स एंड हिट्स यू इन द फेस. एंड द प्रॉब्लम इज नॉट कि प्रीलिम्स का एक दिन एंड उसका रिजल्ट जब आया देन इट हिट्स. द प्रॉब्लम इज यू लिव विद इट एवरी सिंगल डे. You see your friends doing masters, doing jobs, moving ahead in their lives. शुरू में आप cut off कर लेते हैं बिल्कुल, मतलब that was a mistake I did. I mainly cut off from a lot of friends. फिर कभी-कभी थोड़ा बहुत you would stay in touch, you would be in touch with them. पर कोई भी ना आपको बस ये नहीं बोल पाता है with faith and conviction कि प्रीति, you're meant for this. This is what you were supposed to do. ये तो तुम्हारा होना ही है. मतलब there were these phases after prelims. Relatives चुप हो जाते हैं बिल्कुल, because we don't know. I think it's a problem of, I don't know if it's a problem of just Indian society or outside, but we don't know how to offer emotional support when somebody is failing.
true. किसी का पेपर खराब होता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको बोलना क्या है. एक्चुअली बोलना कुछ नहीं होता है, आपको बस you just Exactly. be present there. You just Exactly. make the person feel forgotten, because that's how I used to feel in those years, कि किसी के पास कुछ है ही नहीं क्या बोलने के लिए. And that really hurts. तो मतलब वो सारे साल में, I am from Bihar, my extended family lives there. मुझे वापस घर वहां जाने में भी झिझक होती थी. My family, immediate family lives in Delhi, तो I was here. पर I used to feel कि my self-esteem is already so low. कोई अगर मुझे हल्का सा कुछ पूछ देगा, कह देगा, तो I'll be destroyed. So I used to avoid doing that. But emotionally, it's an extremely difficult journey if you don't have, a couple of friends to support you and understand you and be there for you throughout. And to be honest, it's very, very difficult to find such people. Towards my fourth attempt, I had a couple of friends जिनके साथ मैंने थोड़ा सा prelims पढ़ा, साथ में थोड़ा सा mains पढ़ा. कुछ ऐसी दोस्तियां हैं जो अभी तक हैं, बट आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं किसी पे, क्योंकि आपको गलत लोग मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं इस प्रोसेस में देन फाइंडिंग द राइट पीपल. सो इमोशनली इट वाज वेरी हैरोइंग एंड इट टेक्स अ टोल. It is only after that results came and I came for training and a lot of time has passed through that whole process that I finally feel like myself. जैसे मैं कॉलेज में थी, जो एक एनर्जी थी, एक कुछ करना Yeah. है, वो सब कुछ खत्म हो Yeah. जाता है प्रोसेस. Yeah, you mentioned on the phone call that एक time के बाद you become numb and you've just gone through the whole cycle of emotion, right? Denial and frustration, and then just numb, whatever. Exactly. And it never occurred to you to drop it because you come from Miranda. You could have, and especially ये जो 3-4 साल अभी के हैं, startups and there's a lot of hoopla around and people from DU and all find interesting careers even in the mainstream. But ये कभी नहीं हुआ. The focus was always at least back of the head पे था कि यही इसी पे देना है. I have to see this through. Never did Yeah. you? हाँ, मतलब that was something that when I look back, मैं ऐसे मजाक में बोलती हूँ कि I was a little delusional कि मेरा तो होना ही है, मेरा तो होगा ही. But obviously, after spending so many years and knowing so many stories, you also know people who do not make it after their final attempts also. तो a more practical version of me, जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बैकअप जरूर रखना चाहिए, because you don't know what will work and what will not. But मेरे माइंड में इसलिए नहीं आया कि मुझे कुछ और करना है, because I think वो एक बचपन के जो कुछ सपने होते हैं ना, जिसको आपने इतने साल से संजो के रखा है, वो एक पौधे की तरह है, उसमें आपने खाद पानी सब डाला है. एंड वन थिंग दैट I think was very clear with me was that I had understood the examination. I was failing at it. Prelims में I was failing at it. बट हर बार ना मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि पेपर ऐसा क्यों आ गया. मैं हमेशा ये सोचती थी कि what more can I do to level up my game to the standard of the paper. And since 2015-16 जब मैं कॉलेज में थी, तब से भी अगर मुझे पता है कि मेंस का पेपर है और क्वेश्चन पेपर कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अपलोड करेगी, तो जब तक मैं क्वेश्चन पेपर नहीं देख रही थी, आई यूज्ड टू बी रेस्टलेस इन दैट डे. So from that time all the way here, I'm spending every single day with this process and I'm sincerely working towards it without really any distraction as such. जो humane चीजें हैं वो तो होती हैं, but otherwise I was too. तो इसीलिए मुझे ये नहीं लगा कि कुछ और करने का सोचना चाहिए. एंड द थिंग इज कि ऐसा भी होता है कुछ लोग के साथ कि अगर प्रीलिम्स मेंस लिख दिया, इंटरव्यू भी दे दिया, तब नहीं हुआ, या मेंस लिख दिया तब नहीं हुआ, तो वो ऐसे सोचना है वाजिब. बट मेरा था कि मेंस ही लिखने का मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे, मतलब. तो दैट वाज लाइक, वो पहले एक बार मिल जाए, मैं कर, देन आई कैन सी थ्रू व्हाट मोर देयर इज. बट टू बी फेयर, बट टू वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा टू डू एनीथिंग एल्स. Okay, now let's segue ourselves to the more practical aspect. So, if you can and if you do remember, what went wrong in the first, second prelims? क्या assumptions थे जिसको लेके आप पढ़ रहे थे, and then how they didn't work out for you? क्या सीखा? Because like I said, I think you stayed very close to the preparation, right? So, because the people listening to you and of course your readers of blogs would want to know कि अभी हम वो कौन सी गलती करें जो आपने भी की होगी शायद, which you realize and attempt later. So, nuances of the practical aspects of a bad prelims approach. Matlab, let's go on that. So one of the first things was the lack of conceptual understanding of some of the core subjects. जिसके लिए कुछ मैंने क्लासेस कहीं कहीं पे लगाए, कुछ मैंने यूट्यूब वीडियोस, टेलीग्राम पे वीडियोस थे, उन सब पे आई रिलाइड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कहाँ पे वो कंसेप्चुअल गैप था. क्योंकि कुछ ऐसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं थोड़े से, जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ चीजें अगर कोई एक बार आपको समझा दे, देन इट स्टेज
with you for life. But if you've not understood it, then you'll keep looking at the book, but आप समझ नहीं पाएंगे कि ये what concept is there actually. So एक वो थोड़ा सा fundamental चीज था. अब उसको सुझाना is not very difficult, ठीक है, because you have ample of resources. Then the second thing was कि जो आपके core sources हैं, अब अगर जैसे मुझे geography का कोई concept नहीं समझ में आ रहा, अगर tsunamis कैसे होते हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो for sure I can look up on YouTube, search for a video. But I need to go back to my NCRT and those few paragraphs on tsunamis and make sure that each of those sentences are extremely familiar to me, because that is where the questions are formed from. तो दैट कन्विक्शन की यही बेसिक सोर्सेस हैं, इन्हीं को 10 बार 15 बार 20 बार जितनी बार कर ले वो चीज करना है. दैट अंडरस्टैंडिंग डिडंट सीप इन थ्रू. तो लास्ट मोमेंट में कभी सोर्स चेंज कर लिया, कभी यहाँ से भी कुछ पढ़ लिया, तो ये एक चीज था. देन द थर्ड गेम चेंजर फॉर मी वाज पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस. तो वो थर्ड अटेम्प्ट में भी था और वो फोर्थ अटेम्प्ट में भी किया, बट आई हैड ऑलमोस्ट बिकम अ लॉट more nonchalant about what mocks institutes are making. I would use it for practice. I would use it to do my current affairs. But I was very, very clear कि जो past year questions का question bank है ना, उसी के around जो themes हैं, they are the most important. उन questions के pattern में जो elimination technique आप लगा सकते हैं, जो intuition आप लगा सकते हैं, the reverse psychology that you can apply, those are the things that I need to sharpen a lot. तो मैंने third और fourth attempt में ये focus किया. And one more thing that I was doing wrong, for me personally, what was going wrong was this, that there were not enough exam room simulations of the final paper. So a lot many toppers say कि आप पेपर ले आइए, घर में बैठ जाइए, घर में बैठ के लिख लीजिए, and that works, and I'm sure it works for a lot of people. But for a lot many other people, you cannot simulate the same type of pressure, the same type of time boundation, the same type of environment. मतलब मेरा तो दिमाग ही घर पे कैसे मैं बैठ के अगर सॉल्व करूँ तो कैसे चलेगा, और मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके किसी रूम में जाके बैठ के दूं तो वो डिफरेंटली चलता है. एक उसका जो प्रैक्टिस होता है, दैट इज व्हाट कैन प्रिपेयर यू फॉर द फाइनल पेपर. आप कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है लाइफ में, आप उसके ड्रेस रिहर्सल्स करते हैं, एंड यहाँ पे पूरे साल की मेहनत आप बस एक दिन पे, you know, the stakes are too high, so one needs to practice more in terms and of one more thing, no, you all this while you were preparing, you were at home. Yes, all these attempts, the lows and lows and lows, you were at home itself, right? So same room, same triggers, and like the good, bad, ugly of the whole memories thing. exactly. Yeah, that I think it's a journey. I think अब बता भी नहीं पाओगे a lot what actually you went through. Like you said, did you said it's a blot? अब मैं भूल चुकी हूँ उसको क्या हुआ Black था. hole. I wanted to be हाँ, मतलब उन सारे दिनों का आप अभी जब ये था कि we'll have this chit chat, so I was trying to recall, and some of the days that came back, it's impossible for me to even feel how I used to feel then, because it was so different, and it was मतलब हर दिन सुबह उठ के वही वो सुबह सुबह अपनी कोई किताब उठा के दिन शुरू कर रहे हैं, रात को वही सब कुछ करके सो रहे हैं. It's so monotonous, but the beauty lies in that monotony. I am here because of those days and those years. That is true. But how I felt then and the journey throughout, मतलब एक चीज मैं बहुत humanize करना चाहती हूँ when I talk to aspirants is कि I also used to cry every day. I also used to feel horrible every day. All the kind of emotions that people feel around the preparation of this examination, it's all very, very natural and normal. And coming on this side, I look sorted and I look like I've accomplished something. Yeah. But I was broken, I was finished. There were times when I felt that my story is over. There's nothing that I had to look forward to. And these were not just few days, but these were weeks, months, and years. So it is, I think. And I once read something in such a phase, someone said to someone that एक तरह से देखा जाए तो we are all part of a big statistics. It's nothing personal, right? तो तेरा नहीं हो रहा है या तेरा नहीं निकल रहा है, there's nothing personal. So you have to remove your ego and the journey if you can, because it will not solve however emotional or तुम कुछ भी feel कर रहे हो, you don't deny the feelings, but it won't solve it. And like you said, बहुत सारे लोग struggle करके नहीं भी होता है, they don't see the light of the day because it's competition at the end of the day. And for them to get out and rebuild their life, it's even a more gigantic, क्योंकि खुद को भी तो कहानी सुनानी होती है, right? I mean, and जिसके stakes बचपन से जितने हाई होते हैं वो कहानी और प्यार से ही मोड़नी होती है.
वो कोई तो क्या था ना, किस जिस मोहब्बत का कोई इंजाम ना हो सका उसको किसी हसीन मुकाम पे छोड़ के आगे, कुछ तो था ना एक ऐसी कोई तो एक, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल in this raw and real thing ना, I spoke to lot of people, कप्तान से पहले भी, राइट, ये सब एकदम स्टेलर अकेड्स और बोर्ड टॉपर इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, फिर एसआरसीसी या बिट्स या आईआईटी टॉपर, और फिर यूपीएससी में आके प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहे हैं 2-3 बार, तो धक्के पे धक्के लेकर जा रहे हैं और लोगों को समझा ही नहीं पा रहे कि क्यों नहीं हो पा रहा हमसे, एग्जैक्टली राइट, एंड अपने को भी समझा पा रहे कि शायद मेरे assumption about me were also wrong all the way, maybe, and so So, matlab, related to this is ki, जैसे when I started the preparation, one of my cousins also started his preparation, ठीक है, and he is an engineer by training. Today, he has also found success in examinations. He's doing extremely well in his career. And but when he started, same time पे शुरू हुआ था prep और सब कुछ, and he's always qualified prelims, ठीक है, अच्छा, and okay, he's an engineer by training, ठीक है, and तो एक वो था, कोई ऐसे डायरेक्टली कभी बोलता नहीं था घर में, बट सटली था कि यार इसको तो, ये तो शुरू मतलब क्लास 8 से दिल्ली में पढ़ी है, उसके पहले भी पटना के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ी है, और मेराडा से पढ़ी है, और इसका प्रीलिम्स नहीं हो रहा, मतलब देन द क्वेश्चन इज रेज्ड ऑन, इज शी डूइंग इनफ? बिकॉज अगर उनका हो shit, रहा है प्रीलिम्स, yeah, उनकी सारी चीजें yeah, हो रही हैं, इसका क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, तो मतलब वो फैमिली में भी वो चीज रहती थी, एंड हम दोनों मतलब भैया और मेरे बीच में वी यूज्ड टू टॉक एंड वी यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि ये एग्जामिनेशन ऐसा है, बट एंड ही ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन मी कि जिस दिन मेरा हो जाएगा प्रीलिम्स उस दिन सब कुछ हो जाएगा, बट मतलब वो एक वो चीज थी, एक अनसेड सी चीज थी, तो वो क्वेश्चंस आपके पोटेंशियल पे रेज हो जाते हैं फिर कोई, um, एंड वही बात है कि इस पूरी, जैसे मैंने कहा कि वो मैं सोचती थी कि कोई दोस्त उठा के फोन बोल दे कि नहीं प्रीति तुम्हारा तो होगा ही, पर फिर मुझे कुछ टाइम बाद समझ में आया कि आई डोंट केयर, आई हैव पुट इन सो मच हार्ड वर्क ना, मुझे पता है मेरा होगा, तो फिर मैं किसी पे रिलाई नहीं करती थी कि कोई मुझे फोन उठा के बोले, एंड वंस आई स्टार्टेड हैविंग दैट फेथ, एंड वो चीज फिर धीरे धीरे जब मेरे रिजल्ट्स में भी, पहले अगर मॉक्स वगैरह में भी रिफ्लेक्ट करने लग गया एंड फाइनल रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट करने लग गया, तो मोर एंड मोर पीपल स्टार्टेड सेइंग इट कि होना ही, मतलब अच्छा, इवन बिफोर रिजल्ट्स केम कि नहीं यू हैव अच्छा, गॉट दिस, तुम्हारा होना है, तो वो चीजें वैसे ही बिल्डअप होती है, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने आप में और लेते आए, और you start doing things in a much more oriented way, you start having something substantive, इसीलिए टेस्ट सीरीज वगैरह are very important because then that's how you check how and where you're going to, तो वो चीजें थी, but it's and been, okay, also along, so while like you said, it gets very monotonous, and when you're doing it continuously, did you do something to break out the pattern, or you were like, nahi, I cannot afford to get my focus diverted, like how was your days and weeks and months planned, कुछ अलग किया हटके या same things? यार नहीं हो पाता था अलग कुछ ज्यादा, क्योंकि एक तो अगर आप लाइफ में थोड़ा सोचने लगे कि बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो रहा है, थोड़ा सा दोस्तों के साथ चले जाएं, ये सब वो सब, फिर वो गिल्ट वाला फैक्टर, यूपीएससी एस्पिरेंट्स का एक हाँ, कांस्टेंट फीलिंग इज द गिल्ट, बर्थडे पार्टी में चले गए तो इतना गिल्ट, कहीं बाहर चले गए तो इतना हाँ, गिल्ट, अगला दिन गिल्ट में चला गया, तो फिर मैं तो ऐसा करती थी कि जैसे वो जब एकदम लो फेज वैसा आता था, जो महीने 1.5 महीने में आता था, तो मैं 2-3 दिन चिल ही कर लेती थी पूरा, कि मतलब पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, एंड 2-3 days a break and then I would come back and I would not take the, मतलब over time ये चीज बिल्डअप हुई कि फिर मैंने गिल्ट लेना बंद कर दिया, कि मुझे लगा कि अगर मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रही हूँ, तो अगर मुझे 2-3 दिन का वो हो गया है, अगर ब्रेक हो भी गया, नॉट क्लोजर टू द एग्जाम, मच फादर अवे फ्रॉम द एग्जाम बिकॉज आई स्पेंट इयर्स, तो उस चीज का बर्डन नहीं लेना है, बट मैं ना एक चीज शेयर करना चाहूंगी विच फॉर मी वाज अ गेम चेंजर, एंड ये जो क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंटली मैंने थोड़ा सा किया, जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था ना, उसके फोर्थ अटेम्प्ट वाज ऑन 10th October 2021, एंड हम्म, अराउंड जुलाई आई हैड अ मेजर ब्रेक, मतलब देयर वर थिंग्स हैपनिंग एंड आई वाज जस्ट, आई कुड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे, मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि अब वेयर एम आई हेडेड टू, और अंदर से वो रेस्टलेसनेस थी कि I just have a couple of more months. This is where I need to focus. This will make or break my attempt. And तब ऐसा हुआ कि out of nowhere, and this is why I say कि
गॉड्स ग्रेस था, आप किसी चीज को चाहो तो भगवान भी थोड़ा ओरिएंट कर देते हैं. आई हैड दिस आइडिया कि कोविड का लॉकडाउन था. वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड, शी वाज इन जयपुर, शी वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम देयर, एंड आई वाज लाइक मैं यहाँ पे घर पे अकेली हूँ, वो वहां घर पे अकेले. तो ऐसा कुछ क्यों नहीं कर लें कि सुबह सुबह से रात तक ना गूगल मीट पे वी विल स्टे कनेक्टेड एंड वी विल डू आवर ओन स्टडीज. कुछ चीजें जो डिस्कस करने लायक है वो साथ में डिस्कस कर लेंगे. बोथ ऑफ अस वे इक्वली कमिटेड टू द एग्जामिनेशन, तो वो डिफरेंस भी नहीं था. तो व्हाई नॉट? And once I started doing that, the kind of consistency I had, because 3-4 बजे भी सुबह के उठ गए, 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, पोमोडोरो टाइमर लगा लिया, ठीक है. फिर 9-9:30 जो प्रीलिम्स का टाइम है, उस टाइम पे साथ में बैठ के मतलब स्क्रीन कैमराज ऑफ करके अपने अपने पेपर्स सॉल्व कर लिए, फिर डिस्कस कर लिया. देन फिर 2-3-4 घंटा सेल्फ स्टडी, फिर शाम को सीसैट थोड़ा साथ में प्रैक्टिस कर लिया, फिर रात को कुछ मिसलेनियस चीजें देख ली. तो this was something that helped me break out of that sort of monotony, because by the time I was writing my 4th attempt, I was at the end of my energy to do anything in life, and I was at my lowest in my life. तो ये अगर नहीं होता तो बहुत दिक्कत होती. बाकी monotony रहेगी हमेशा, but a little bit more focus on sort of your physical well-being, in the sense कि आधे घंटा walk कर लेना या कुछ exercise, that is the best one can give to oneself. And to listen to good music once in a while, watch good cinema. I think I watched some really good cinema during those prep years, कि कभी हफ्ते 10 दिन में एक कोई अच्छी सी non-Indian movies, या did you explore the world cinema? Yeah. I explored world cinema. India Awesome. थोड़ा non, and this was like COVID के लॉकडाउन वाले टाइम पे, तो मैंने फोन बंद कर दिया था, सिम विम मैंने इधर उधर कर दिया था, तो I just had me, my books and time with myself. So I did watch some good cinema then. So did your friend clear? That's how it did was. your friend clear the exam or parts of it? I'm hoping she will very soon. All my prayers are oriented to her. Okay, we wish the best as well on that. Okay, cool. So prelims was done in the 4th attempt, and convincingly so. And then how were you so confident about the mains? Matlab, what had you figured out about the mains? You know, because this was your first attempt at mains anyway. And I say, you probably were just looking at the mains paper and figuring out a strategy or figuring out patterns. So mains mein aisa kya tha which you had figured out already and you were so confident about? So one thing was कि जैसे बहुत सारे टॉपर्स ये बोलते हैं ना कि योर प्रेपरेशन कंसिस्टेंटली हैज टू बी मेंस ओरिएंटेड, दैट इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो एक वो उसमें ना वो समझने की मेरी गलती थी. ऐसे बहुत लोग इसे गलत अज्यूम कर लेते हैं कि अगर आप सिंसियर कैंडिडेट है तो प्रीलिम्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फोकस ऑन योर मेंस. सो दैट वाज माय मोटो शुरू से, एंड दैट वाज आल्सो द रीजन व्हाई आई वाज नॉट क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, क्योंकि उसके लिए जो एक स्पेशल स्ट्रेटजी, जो एक स्पेशल फोकस चाहिए, वो मुझे सोचने समझने में टाइम लगा कि मैं सोचती मैं तो बहुत सिंसियर स्टूडेंट हूँ, प्रीलिम्स तो मेरा हो जाएगा. तो इस वजह से लेकिन डे 1 से मेंस पे फोकस रहा. तो ऑलवेज ऑन द आई फॉर कीवर्ड्स, ऑलवेज ऑन द आई फॉर looking to write answers, constantly used to look at topper answer copies even during college. So that thing was there. And first attempt say I used to do some test series also. But in my preparation for my 3rd attempt, what had happened was that I had joined this one few classes, जिसमें एक चीज थी कि test series होते थे mains के throughout the year. ठीक है, 16-17 टेस्ट हमने दिए थे. एंड now what specifically happened is कि for every topic of mains I had like 7-10 or more days. जैसे अगर आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं किसी भी कहीं के भी, तो उसमें वो जो ब्रेक डाउन होता है ना सिलेबस का, तो उसमें जैसे अगर आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री है तो आई हैड दैट मच. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मेंस के भी जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, आई यूज्ड टू लुक एट ऑल ऑफ देम, क्योंकि it's not just in prelims that past year questions are repeated, it's also in mains. So I used to look at that. Then I used to have a specific strategy for each of those sections. एंड वो स्ट्रैटेजी को फिर मुझे एम्यूलेट करने का मौका मिल जाता था. जैसे आर्ट एंड कल्चर जैसे टॉपिक में भी आप क्या स्पेशल करेंगे, तो कुछ डायग्राम्स आप बना सकते हैं उसमें भी, कुछ आपके एम्फेटिक कीवर्ड्स इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में हो सकते हैं. वो अगर इफ समबडी हैज लुक्ड एट माय नोट्स दे विल फाइंड इट्स एवरीवेयर कि. और आर्ट एंड कल्चर जैसे सब्जेक्ट में भी ना अगर कंक्लूजन करना है तो कुछ एक ग्लोबल डेक्लेरेशन डाल दिया, यूनेस्को डेक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी जैसा कुछ
अगर आपने डाल दिया आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में जिसमें पीपल आर स्क्रैम्बलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, देन दैट इज व्हाई यू गेट योर हाफ एंड 1 मार्क एक्स्ट्रा. ज्योग्राफी में मैप्स होने चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में टाइमलाइन एंड डेटा होना चाहिए, पॉलिटी में जजमेंट्स एंड आर्टिकल्स होने चाहिए, इकोनॉमी में अगर कोई डायग्राम कोई ग्राफ बन सकता है, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें. तो वन थिंग वाज कि फॉर एवरी सेक्शन ऑफ द सिलेबस आई हैड my notes, past year questions, as well as a specific strategy. Mains के लिए ओवरऑल तो कुछ चीजें हैं ही कि आप इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन लिखेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे, अच्छे कीवर्ड्स यूज करेंगे, बट हर एक टॉपिक के लिए भी बन सकता है, व्हिच आई हैव शेयर्ड इलैबोरेटली ऑन माय ब्लॉग. तो वो था. और थर्ड अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने 2-3 महीने जब काम किया तो मैंने कुछ पेपर्स चेक किए. देन आई रियलाइज कि इट डज नॉट रियली हेल्प विद द प्रिपरेशन एज सच, बिकॉज वो प्लेट्यू हो जाता है इवैल्यूएशन में. 1-2-3 आंसर के बाद इट जस्ट गेट्स वेरी मोनोटोनस, यू डोंट लर्न. बट व्हाट आई रियलाइज दिस कि कोई एग्जामिनर जो आपका पेपर खोलता है, पहले 2-3 आंसर्स में ही और शी मेक्स अप माइंड कि मुझे किस रेंज में मार्किंग करनी है. आपकी छोटी मोटी गलती ज्यादा मन से माफ की जाएगी अगर आपके आंसर्स की क्वालिटी अच्छी है. एंड अगर आपने मतलब अगर आपका क्वालिटी शुरू से ही वो है ना, तो दैट पर्सन हैज ऑलरेडी जज्ड यू. And this is just human. The examiner who is sitting at UPSC is not being paid too much to read every sentence. But by the dint of what image your answer gives, वो आपका एक जजमेंट हो जाएगा. ठीक है. देन मेरी हैंड राइटिंग वॉज, आई हैड इम्प्रूव्ड इट अ लॉट ड्यूरिंग माई प्रेप, बट जब मैं बहुत स्पीड राइटिंग करती थी तो थोड़ा सा अनक्लियर हो जाता था. तो फिर मैंने हैंड राइटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिया कि मैंने सोचा कि नहीं अब एक सारी मतलब आंसर्स So you left nothing to chance. Yeah. तो मतलब after I was already scoring the highest in the test that I was giving. तो फिर मैंने कहा, मैं गई जो वहाँ मेरे mentor थे, आसिफ सर, I asked him, sir, what more? So he's like, handwriting थोड़ा better हो सकता है, it can be a little bit more clear. मैंने कहा ठीक है सर, अब ये कर लेते हैं. तो मैंने वो भी कसर नहीं छोड़ी थी. एंड ओवर टाइम मैंने समझ लिया था कि आंसर में सब्सटेंस तो होना ही चाहिए, बट आंसर का एक स्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए और वो एग्जामिनर को दिखना चाहिए. तो इंट्रोडक्शन अलग दिखना चाहिए और बॉडी में भी सब हेडिंग्स देती थी मैं, और उसको मैं एक डब्बे में डाल के अच्छे से वो कर देती थी. तो देन द एग्जामिनर नोज कि क्वेश्चन से कीवर्ड पिकअप करके ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर एड्रेस्ड. एंड इफ यू हैव डन दैट, if you've completed the paper, if your answers are making sense, then invariably you will get the interview call. तो ये confidence मुझे आ गया था. तो and I had worked on these things, तो इसीलिए फिर I knew कि वो हो जाएगा. Now I'm curious, how did this translate into the final mains? कि number did it work out just the way you thought it would? Yeah, it sort of did, because I got 810 in my written scores. Wow. And my interview scores was invariably and unexpectedly low, which was 150, 151. तो वही था कि इंटरव्यू में उतने कम मार्क्स आने के बाद भी I could not be stopped from getting into the list or getting a very तो मतलब वो. And do you know why interview thing stopped at 150? Like, were you expecting that, or you knew it निकलने के बाद कि ये कहीं फंसेगा, या that was the bummer? I didn't expect इतने low scores. I think what had happened that day, or मतलब it was the first day of the interview cycle. तो एक तो था कि मुझे preparation के लिए time थोड़ा कम मिला था, and interview के लिए भी एक थोड़ा preparation और orientation चाहिए. My answers were a little generic. It was not as much more specific as it could do. And मतलब board की subjectivity तो होती ही है. Plus I also felt that maybe because of how bad a space that I was in life at that point of time, emotionally, मतलब मुझे 1 रुपए का कुछ excitement उतना नहीं हो रहा था for interview. I was just distraught in some sense because of where I was. I've also reflected. And a couple of my answers where मतलब कुछ पूछा जा रहा था and I did not answer exactly what was asked. So I think these few things went a little ऊपर नीचे. बाकी mocks and all were good only. So but I've spoken to like so many rankers of in this era, मतलब last year, and लोगों ने अपना self evaluation ऐसे ही किया है. Like people, there was some guy who told me कि because I wasn't able to clear interviews, so I think I'm forgetting the name, he was clearing mains all the while, पर interview हमेशा फंस रहा था. And then वो समझ में ही नहीं आता क्या, तो कहता एक तो मेरा इंटरव्यू इसलिए फंस गया क्योंकि they could sense this thing in me कि I'm just clueless about how to perform in the interview, और वो भी फंसा. And then something happened in the last, some serendipity happened in the last one, and he cracked an IPS rank, I think. But the kind of awareness is
very nice on that And one. that awareness also comes with time, no, actually. The point is ki with interview, it is a test of your personality and those kind of things are there. But I don't think that is just it. The point is कि आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप के questions could be asked. आपको अपने DAF पे बहुत अच्छे से काम करना होगा. मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था कि मैंने DAF पे बहुत अच्छे से काम किया हो. My answers didn't stand out. I was, and my एक और ये भी होता है कभी-कभी कि if your overall credentials are good, but if you're not living up to it very well in your answers, Oh because yeah, they don't have anything except those 25 minutes with you to judge you. yeah. तो then वो अगर उनको dissonance लगा या जो भी जितनी चीजें थी और it was not your day, so that kind of subjectivity is always there, which I also feel to a sense is little. I cannot say that matlab it's absolutely objective No, it because that makes sense of sense. subjectivity is there, but there is that sense of fairness, of course. There's always that sense of fairness that UPSC upholds कि आपको आपने जैसा perform किया है उसके accordingly करेंगे. तो मुझे खुद भी when I look back and if I think if I was on the other side of the board and if I looked at somebody in the state that I was and the kind of वो जो पूरी एक vibe आई होगी शायद, it was nothing of how I talk like that, of how मतलब मेरी जो vibe energy अभी है. So I think because of all of those reasons that I was not The adequately amount prepared. of variables, no? The amount of variables in this UPSC के milestone, it's like insane. आप दो कंट्रोल करो, एक मिस हो गया, it will reflect, like you said, no? मेंस में भी आधा एक नंबर के लिए भी पूरा वो माइंडसेट चाहिए कि कैसे तुम क्रैक कर रहे हो. पता है हमने Exactly. ना सीडी में अभी तो mentorship is something which we realize you need because if the exam cycle is so big, you need some kind of a GPS for yourself कि कहाँ फंस गया वगैरह वगैरह. But what we realized this year, especially speaking to people like you, is कि if you're not doing things and then actually getting the real feedback वापस, then वो बस हवा हवा में है और you'll get unreal dopamine kicks कि हाँ समझ में आ गया and I'll perform it. बट जितना तुम प्रिपरेशन रियल करते जाओगे ना उतना ऑब्वियसली चांसेस है कि यू विल गेट इनटू द थॉट्स ऑफ शिट दिस इज आल्सो नॉट वर्किंग एंड देन यू विल लाइकली बाउंस अप अगेन. So we started something called like 21 day challenges, 30-day challenges, right? When we said कि we'll give you some tasks, खुद ही करना है उसका proof of work दिखाना है, something which you did with your friend, no, in Jaipur, कि I'll stay, वो study together वाला फंडा. एंड उसको करते करते बहुत लोगों को फील हुआ कि मैं तो बहुत ही लूज प्रिपरेशन कर रही थी या कर रहा था इस लेवल की. जब बाकियों के प्रिपरेशन सबमिशंस मैंने देखे तो वी फॉर्म्ड अ टेलीग्राम ग्रुप एंड वी सेड just charge $300 and we'll pay it back to you if you do all the things, right? So this is just वो जो होता है ना, you forfeit if you do not live up to your claim, but if you do, this is yours. But interestingly we saw that well, like 30% people realized that they were not even preparing up to the level, like वो अपनी अलग दुनिया में prepare कर रहे थे, which is what happens if you're preparing alone and you're not this critical of your preparation, right? तो उनको एक धक्का लगा कि तो मैं तो मतलब ट्रैजेक्टरी अलग पकड़ रही थी और तो एक साल बाद पता लगता वरना कि मतलब वापस ही आउट करना है. फॉर सम पीपल इट वाज कि इतना कर लिया एंड आई डोंट वांट टू प्लेटू, तो आई वांट अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आर नेक टू नेक एट माय लेवल एंड इट्स विद द नो नॉनसेंस थिंग. And then people wanted like notes from people like you कि okay now इतना तो कर लिया and I did this is my proof of work, अब level up कैसे कर सकते हैं, right? So this becomes so real for people that वो जो monotony है ना वो थोड़ी बहुत खत्म हो जाती है, वरना it is damn monotonous, right? And I was speaking with Exactly. Ariba, who's I think your batch IP or something. She also had an interesting point कि maybe UPSC wants to check this in you. Because this job requires, it's an unglamorous job at some level, right? Because apart from the glamour you do get, you are at the backbone and the grind of the the bulk of the work is on you, so there's no glamour while you're doing the job, and they want to see how much meticulous can you be again and again even when there's nothing flashy about it. So maybe that's a temperament they check across Yeah, the stages like you said. But absolutely. and you must have some similar ideas as well. Yeah, and matlab, this is exactly what I was also referring to in my blog that I wrote, Abhi, ki, you need to understand as aspirants, we need to understand what the examination is demanding, and that understanding has to be very, very unique to us. Because, like I said, कि अगर मेरा एक तरीका था prelims qualify करने का, mains करने का, interview करने का, मेरे जितने batchmates हैं सबके अपने अपने तरीके हैं, but they're all still here, and that is because they understood the examination and how and what this how it makes sense to them.
So until one has gone through that grind and the process of spending enough time specifically with your syllabus, past year questions and test series, one cannot make it through. And वो monotony break करने का मतलब मुझे भी जब कभी कभी ऐसे एकदम जब सबसे low phase भी रहा है तब भी if I could go on in the process, it's because I used to be writing tests. वो अलग ही kick मिलता था कि, and especially because mains was something that I enjoyed. तो मेंस में तो मुझे अलग ही मतलब मजा आ जाता था कि मेंस का आंसर मैंने अच्छे से 3 घंटे में कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ और अच्छे आंसर्स लिखे हैं, फिर मार्क्स भी अच्छे आते थे, फीडबैक भी अच्छा आता था. सिमिलरली फॉर प्रीलिम्स वही चीज की कि कुछ वहां के मॉक्स दिए इंस्टीट्यूट्स वगैरह के, बट बाकी प्रीलिम्स में स्पेशली आई कीप एम्फसाइजिंग कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं दे आर योर एवरीथिंग इफ वन हैज स्पेंट इनफ टाइम विद देम. एंड उसी को एक आधा ऐसे बुक्स आते हैं, कंपाइलेशंस आते हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस के, उसको मैंने उसके 2-3 कॉपीज में अपने पास रखती थी. एक को मैंने और उसी को एक बार मैंने टेस्ट की तरह दे दिया, एक बार ऐसे ही पढ़ लिया, फिर कुछ टाइम बाद फिर से टेस्ट की तरह दे दिया, फिर आई यूज्ड टू स्क्रॉल थ्रू इट. तो बिकॉज ऑफ दिस आई हैड डेवलप्ड माई ओन अंडरस्टैंडिंग कि नहीं, पैटर्न बहुत रिमार्केबली नहीं चेंज हो रहा है, क्वेश्चन की कुछ फॉर्मेट्स बदल सकते हैं, बट जो कोर क्वेश्चंस हैं जिसके बलबूते आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो रिपीट हो रहा है, डेकेड से रिपीट हो रहा है. तो अगर उन चीजों पे मैं हर सब्जेक्ट में फोकस करूं और उन चीजों को मैं अच्छे समझ लूं तो होगा, प्रीलिम्स भी होगा, फिर मेंस में भी वही चीज है, पास्ट ईयर से कुछ चीजें आइडेंटिफाई करके देन करंट की चीजें आप उस पर वर्क करें. तो इट्स अ होल ग्राइंड दैट पीपल नीड टू गो थ्रू, एंड इंस्टेड ऑफ running for sources and for different kind of supports, one thing, आप कहीं से भी कुछ भी सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग कोई भी देगा वो क्रेडिबल हो, अच्छी बात है, बट पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस पे अगर इंसान रिलाई करता है और कोई भी एक क्रेडिबल टेस्ट सीरीज पे टाइम एंड अगेन उसको देकर उन मार्क्स को और उस फीडबैक पे काम करता है, then one will ultimately find success in the exam. And one interesting thing, I think कुछ साल पहले तक नैरेटिव बहुत ही ब्रॉड ब्रश थे कि वो इंट्रोडक्शन बॉडी इंक्लूजन कर दो एंड मेंस एंड ये कर दो. एंड द मोर एंड मोर आई टॉक टू पीपल नाउ, एंड दिस आई जस्ट स्टार्टेड दिस ईयर स्पीकिंग विद फोक्स, ये जो इतना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जाके जितना ये सब लग रहा है ना वापस, एंड आई डोंट नो इफ इट्स, आई मीन जितने भी लोगों से मैंने बात किया वहां तो ये यूनिवर्सल है, एवरीवन इज मेकिंग द प्रिपरेशन वेरी यूनिक टू देमसेल्व्स, थोड़े बहुत धक्के खा के ही सही, बट there's so much work people are putting into their relationship with the UPSC prep that जो बहुत पेरिफेरी में काम कर रहे हैं ना उसका तो मेरे को लगता नहीं कोई चांस है. मतलब obviously there'll be outliers, but and did you observe this in academy that speaking with people that they hugged the UPSC syllabus, they just worked through with it? Did you see that? Is it how things are these days? Yeah, matlab, one thing that is common across all of us who have made the cut is कि वो कोर चीजें सही की गई. पता है इस पूरे एग्जामिनेशन और इस कंपटीशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि मोस्ट पीपल आर नॉट डूइंग द बेसिक थिंग्स एंड नॉट डूइंग देम राइट एंड नॉट डूइंग देम इनफ. एक बार कर लिया, बोर हो गए, कुछ और उठा लिया, ठीक है. एंड इतने सारे सोर्सेज और इतने सारे मतलब इट्स एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इट्स an overload of everything at this point of time. And आप एक चीज के बाद दूसरी चीज में, इस चीज में enroll कर लिया, उस चीज में enroll कर दिया. Parents are more than willing to give you money for enrolling in each and everything. Yeah, true. But at the end of the day, are you spending enough time with see राज वाले चैप्टर में किस डेप्थ तक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना? क्योंकि जैसे आप एंड ये सारी गलतियां ना आप पहले 1-2 अटेम्प्ट में अगर कर रहे हैं, आपको माफी ठीक है दी जा सकती है कि आपको समझ नहीं आया कि क्या पूछा जा रहा है. बट आफ्टर ऑल ऑफ दीज इयर्स ऑल्सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट ऑल द रैंडम फैक्ट्स गिवन इन दैट पंचायती राज चैप्टर इज नॉट टू बी लर्नड, इट्स एक स्किम थ्रू करके इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो बिकॉज उस डेप्थ तक क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है. अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई मतलब आपका प्रिपरेशन इनफ नहीं रहा है, आपने उस चीज पे फोकस ही नहीं किया है कि एग्जाम आपसे मांग क्या रहा है. एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट. वन, एक तो ठीक है आपकी if you're sincere enough, if you're committed enough, then you'll figure out. Other thing is कि many people just rush into this examination for the sake of either things which are not right, कि आपको fame मिलेगा, glory मिलेगा, लोगों को करप्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. और दी अदर थिंग इज कि किसी रिलेटिव ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, मम्मी ने बोल दिया, किसी ने कह दिया, बस चल गए, शुरू कर दिया, फिर मन नहीं लग रहा है, इसमें कुछ कर नहीं रहे. दैट इज वन कैटेगरी. अनदर इज द सिंसियर लॉट हु रियली वांट्स टू डू दिस but does not understand that this is an extremely painful and monotonous journey, and to be honest, on the other side of it, maybe not even that rewarding. What's the youth of so many lakhs of people of this country.
I hope कि ऐसे और venues हो जहाँ पे यही energy, यही dedication use हो पाए, because the seats here are limited. The problem here is कि competition इतना ज़्यादा इसलिए है, so many people are competing for these few seats. ठीक है? True. मतलब and तब अगर इतने stakes high हैं तो या तो आप उसमें exceptionally काम करिए, मेहनत करिए so that you make the cut, or please move on in life. Matlab, it's as good, and if it does not aligns with your temperament, then one can always look for finding better avenues, because this is not the end all of life. This is not where your life started or where it will end. Neither is it the only way to make No, a good makes contribution. sense. Completely makes sense. I have batchmates from IIT, मतलब मेरे batch के, then they went to IIM and then job करी 2 साल, and then they came to UPSC thinking कि वो life से थोड़े बोर हो गए हैं, IIT भी कर लिया, IIM भी कर लिया, that the first world problems, why don't do something, और यहाँ आके 5 साल बिल्कुल के साथ दिए, now they can't go back to the job, and I mean, it's madness, and you can't talk with them because अब आप ऐसा कुछ नया नहीं बोलोगे जो वो नहीं सोच सकते, तो it comes back to the same thing कि यार आपको बस सुनना है and pray that they find out a solution for themselves, because it's harrowingly mad out there. You're in your 30s and suddenly you like feel like a failure, and people like first world है, तो सब कुछ कर चुका है, you get up. It's very, very bad. Awesome. But thanks for this chat. What we'll do, I'll take the links of your good blogs and whatever you recommend, and I'll put them on the description. And if time permits for you, and we'll chat this outside, we would want to do a challenge with you, at least at the helm of it, and we'll help around. जिसमें you will prescribe कि क्या जैसे the way we do challenges are that there are rewards, which is the ultimate one, is you get everything. But there are some constraints. You have to abide by some rules. I mean, that's at least 21 दिन तक तो बात मान लो. There are some penalties to that. And then there's a gradual ascending. Rewards, मतलब कि then you'll get this. So maybe the best of your notes, you'll then get it. Or yeah, you will give a zoom on how to utilize these best notes. जैसे कि वो information overload खत्म हो, and the most qualifying and sincere people actually get the best. So we'll try to do a challenge with you, limited day challenge, if time permits for both of us, and if people are willing. And then we'll see how we can make this interesting as a journey, right? And if there are enough rankers who have their own unique journeys and unique practical notes, so बहुत सही होगा if everyone comes up with a fun challenge kind of a thing, which the best of the best see through the end of the day. That way we have some shot at cutting through the madness तो नहीं जाने वाली. अब तो aspirants भी आके, while they are even preparing for the exam, they're also giving their own notes in their own way. So it's a complete ruckus. And it's anyone's guess. कितने टेलीग्राम ग्रुप पे कहाँ क्या नोट्स ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, वो कुछ क्यूरेशन रह ही नहीं गया. Long back it was simpler. Cool, Preeti. Thanks for coming in, and thanks for having this candid chat. I'll just add on something before we end the chat, is that it's a very recent thing that I thought of. We were in Mumbai for our GST attachment, and I was at Haji Ali. We were looking at a sunset, and I just thought that where was I 1 year ago, and I had nothing in my hand, and today I'm here at Bombay, and I loved Bombay, and just watching the sunset, and I realized that the only thing I had then was hope. So because this video goes across to people, as Prelims is just around the corner, whatever your situation, whatever you've faced in past, present, and future, I just hope that people hold on to hope and they find success in this examination or whatever else they pursue in their life. So, with that, I would like to conclude this chat. That is beautiful. I'll put this right up on the intro. Sure. It's a nice line. Okay. Thanks for, coming in. Lovely to have you here. And I'll touch base with you again soon. Yeah. Thank you. Cool.